Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine and doing well. So this is another continuation of my lecture regarding some basics of number theory and the multivalued Boolean function. Let me elaborate this. Last time we have discussed uh, what you call the modular classes. So there are one element, we call it as a primitive root or primitive element that generate the whole group. So if I can say, let us consider a modulo class Z5, which is 0, 1, 2, 3, 4. And I take that modulo steric, I mean to say excluding 0, 1, 2, 3, 4. So primitive root and I can call it as a, if you can take power of primitive element, so it generates all the element of particular set. We can call it as a primitive element, or and sometimes we call it as a primitive root. If I can take the, like I take 1 and 1 to the power 1 to the power 2 is 1, that it does not generate the whole, all the element. But if I can take 2 to the power, like 1 is 2, and 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 6, under mod 5, which is 1. 2 to the power 3 is 8. And 2 to the power 4, 8 हो जाएगा, 8 under mod 5, 3. If you can see this one, it generates all the distinct elements without repetition. But after, when n is 4, it will generate repetition. But before this 4, there is no repetition. In that case, we can say the 2 is primitive. 2 की पावर 3 8 बनता है, करेक्शन कर ले. Sorry, 2 to the power 8. Sorry, I must say. So you will get, so you will get 8 with under mod 5, it will be 3. Okay? 2 power 4, which is 16, under mod 5, which you will get 1. So if you can see the whole element, all these elements are generated with 2. If you just start with 2 power 0 and up till 2 power what you call 3, you will then generate all these elements. You can just start with 2 power 0 2. But I just start with 2 power 1. So here you can see, with the taking the power of 2, you will generate all the elements of Z5 static other than 0, multiplicative. So in that case, 2 is primitive Z5. So if I can take Z 3 power 0, which is 1, 3 power 1, which is 3, 3 power 2, which is 9, under mod 5, which is again 4, 3 power 3, which is 27, under mod 5, this is under mod 5, which is come round to what? 2. So in that case, with all the power of what you call from 0 to n minus 1, you have generated all these distinct elements. ठीक है, मतलब आपने
तमाम की तमाम पावर में रिपीटिशन ही है। अगर यहाँ पर कोई रिपीटिशन आ जाती ना तो वो फिर प्रिमिटिव रूट ना होता। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं, ये 3 भी इसका है, therefore 3 is also a primitive root of G5 step। तो अगर 4 पावर 0 करके देखें 1, 4 पावर 1 4, 4 पावर 2 is 8, सॉरी 16 और मॉड 5 पर क्या हो गया 1, तो क्या आ गई है, रिपीटिशन आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे 4 is not a primitive root। ठीक है, ये बात फॉलो कर रहे हैं। अब आप इसके बाद जो लेट अस से 4 पावर 3 भी ले लेना तो क्या आएगा 48, तो अंडर मॉड 5 क्या होगा 3, और अगर आप 4 पावर 4 ले लें 192 92 हो गया या 192, 192, तो वो क्या आ जाएगा, बता सकते हैं इसको, 2 आएगा, मोड 5 करे तो 2 आएगा। अच्छा, तो यहाँ पर रिपीटिशन आ गई है ना एक में, यस सर। अच्छा आप देख रहे हैं इसको, तो मैं जो बताना चाह रहा था कि ये क्या है, हमारे पास तमाम के तमाम ऐसे एलिमेंट जो किसी भी Z5 इज ए फाइनाइट फील्ड, जो किसी भी ग्रुप को या किसी भी सेट को जनरेट कर दे सारे का सारा मल्टीप्लिकेटिव उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट या प्रिमिटिव रूट बोलते हैं। तो एक चीज होती है फाइनाइट फील्ड की, जब हम बात करते हैं या गैल्वा फील्ड की या गैल्वा एक्सटेंशन की, तो हमारे पास एक होती है रिड्यूसिबल एलिमेंट्स और ठीक है, लाइक अगर मैं आपसे एक बात करूं कि लाइक मेरे पास अगर एक पोलिनोमियल लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या होंगे, शाबाश, इसके रूट होंगे x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा। तो ये रिड्यूसिबल है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, but it is not a reducible in a real number। ठीक है, इसके रूट किस में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिड्यूसिबल है इन कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन ये इररिड्यूसिबल है इन रियल नंबर, मतलब इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो जो गैल्वा फील्ड एक्सटेंशन है, वो जो हम पहले बातें करते रहे हैं Z2, Z24, Z4, Z2, उसकी पोलिनोमियल एक्सटेंशन को हम गैल्वा फील्ड रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। गैल्वा फील्ड व्हाट यू कॉल दी a field that is generated through one primitive irreducible polynomial। As I discussed with you, the primitive element, an element that generates the whole elements of any set. The primitive irreducible polynomial generates the all possible element of a Galois field because it is a primitive। You get my point? So let me elaborate this way. Finite
Galois field. A finite by the following ये जो coefficients हैं, all these coefficients ai belongs to ZP and you call it as a P of x. It means to say polynomials whose coefficients from ZP. So let me elaborate this with the help of I generally write ZP of x, any basis, any P. So I am discussing all these things in binary and my topic is again I'm basically interested to define these things. So my topic is binary Galois field. So I have to put this GF 2 power 2 power n, and this is Z2 of x, and this is Q of x, and A0 A1 alpha plus A2 alpha square up to so on plus AN minus 1 alpha, AN minus 1 alpha power n minus 1, and where all AIs belongs to Z2. So in that case, the Q of x is fundamentally primitive irreducible polynomial, our Z2. Here it is our ZP, but here this is our Z2. So if I can talk to you about finite field, that is GF2, it has only two elements, 0 and 1. If I can talk to you 0 to power 2. So this is Galois field of 4 elements. Let me take Q of x, primitive irreducible polynomial in this. It must be of degree n degree polynomial. So I am taking GF2 raised to power 2, so degree of this polynomial will be 2. So in that case, generally the Q of x has degree n. So I am taking G here n as a 2, so the coefficient are from either 1 or 0, the coefficient are 1. ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 1 और Q 1 पुट करता हूँ, इस पोलिनोमियल 3 आ जाएगा, अंडर मॉड 2 क्या होगा 1, तो इसका रूट तो नहीं लाएगा Z2 के अंदर. Does root of this polynomial exist under Z2? Q1 x की जगह आपने 1 पुट कर दिया सर. जी, क्योंकि मेरी अब जो तमाम जो मैं किसके अंडर इसको सॉल्व कर रहा हूँ मॉड 2 में, तो मेरे पास Z2 में क्या आ सकते हैं 0 या 1. बेस मेरी वो है ना बाइनरी है, तो 0 मैं दोनों पुट किया तो 0 तो नहीं होगा मेरा पोलिनोमियल, तो इसमें इसका रूट लाई नहीं करता. तो दिस पोलिनोमियल इज व्हाट irreducible in
Z2. Let us consider alpha is the root of q of x. अगर अल्फा रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को. If alpha is a root, then it satisfies this equation. So alpha square plus alpha plus 1 equal to 0. So alpha square minus alpha minus 1. So I can write it down. Alpha square 2 alpha minus 1 plus 2. Under mod 2. 2 alpha किसके equivalent है? This is 0. This is because if we can 2 divided by 2, remainder is 0. So 0 into alpha, if you can write 0 into alpha or 4 into alpha or 4 into 2 into alpha, 4 into, these are all same. So 2 is also additive identity in under mod 2. So 2 alpha अगर मैं ऐड कर लूँ 2 अल्फा को या 2 कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा. तो ये अल्फा आ गया और ये 1 आ गया. तो मैंने सिर्फ इसको इसलिए किया ताकि मेरे पास ये माइनस खत्म हो जाए किसी तरीके से. ठीक है. तो अब आप देखो अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करो जरा इसको बोथ साइड पर. अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा. तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा. ये अल्फा किसके इक्विवेलेंट था? शाबाश. अल्फा प्लस 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस 1. अल्फा किसके इक्विवेलेंट होता है? 0 के. 1 आ गया. अल्फा पावर 3 किसके इक्विवेलेंट हो गया? 1 के. ठीक है. तो अगर आप अल्फा 4 कैलकुलेट करें बोथ साइड पे अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा आ जाएगा. अल्फा 5 कैलकुलेट करें अल्फा स्क्वायर. तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है? 0. नहीं, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस 1 के. तो अगेन क्या होना शुरू हो गया? रिपीटिशन. तो ये जो प्रिमिटिव इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ये बेसिकली आपके पास क्या होता है? ये जनरेट करता है फील्ड के सारे एलिमेंट्स को. ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप लोग? सो अगर लेट अस से अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं अल्फा स्क्वायर पर क्या हो रहा था? अल्फा प्लस 1 हो रहा था. तो अल्फा की पावर 1 पर क्या होगा? अल्फा ही होगा. अल्फा की पावर 0 पर क्या होगा? 1. तो इसके एलिमेंट क्या होंगे? और अल्फा यूजुअली हम नोटेशन में लिखते हैं इसमें भी 0 होता है. अल्फा पावर इन्फिनिटी ये 0 के इक्विवेलेंट होता है क्योंकि 1 ओवर समथिंग 0 ये नोटेशन वाइज लिखते हैं. वैसे हम अंडरस्टूड है कि 0 उठाते हैं. तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट था? अल्फा पावर प्लस 1 के. तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें? तो GF 2 रेज़ पावर 2 के अंदर कितने एलिमेंट है? 0 1 अल्फा और अल्फा प्लस 1. तो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव वो उठाता हूं तो उसमें कितने आएंगे? 1 अल्फा और अल्फा प्लस. ठीक है. तो अगर मैं कैले टेबल से अंडर एडिशन मॉड 2 इनको 0 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा, ये क्या है? 0 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा. तो ये क्या आ जाएगा? 0 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा. ये क्या आ जाएगा? 1 अल्फा 1 प्लस अल्फा. ये क्या हो जाएगा? 2 अंडर मॉड 2 0. ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा. ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस अल्फा अंडर मॉड 2 2 क्या होता है? 0. तो अल्फा आ जाएगा. ठीक है, देखते जाए. 1 प्लस अल्फा ये क्या आ जाएगा? 2 अल्फा विच इज 0. ये क्या आ जाएगा? 1. ये क्या आ जाएगा? अल्फा. ये क्या आ जाएगा? 1. ये क्या आ जाएगा?
0. You got my point? So if you can see this one along principal diagonal, there is a symmetry. It's a abelian group. Let me elaborate this with multiplication. 2. 1 alpha, then 1 plus 1 plus alpha. If you can write it alpha square. This is 1 alpha 1 plus alpha, or sometimes you can write down alpha square. So 1 alpha 1 plus alpha. This is alpha square. Alpha square is 1 plus and this is, अगर आप इसको इस तरह लिख लें अल्फा स्क्वायर alpha अल्फा 3 हो जाएगा ना, और अल्फा 3 किसके इक्विवेलेंट है? 1 के। अभी मैंने करवाया जी alpha 3 is equivalent to 1. So this is alpha square. Alpha square is 1 plus alpha, and this is alpha 3, and alpha 3 is equivalent to 1. So alpha 4 is equivalent to alpha. ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये देखें किसी रो किसी कॉलम में रिपीटिशन आ रही है। अच्छा, generally why I am going to use these kind of things instead of Z4? Let me elaborate this one. Z4 have 4 elements, and GF2 raised to 2 have also how many elements? 4. So if you can see this one in a multiplicative, inverse of 1 is 1, inverse of alpha is alpha square. Because you can see corresponding to identity, you have to see in above element. In that row, where is the multiplicative identity, and from that above you have to see this element. So alpha square is alpha. So if you can see this, all 3 elements have inverses, but in Z4 you have 3 elements under multiplication, but 2 have inverses, but all elements haven't inverses. So it is the benefit of Galois field only. So that is why we are going to incorporate the Galois field. So you got my idea perhaps. GF 2 power 3. So it has Q of X is of order 3. So how many elements it has? 8. So let alpha be the primitive root. x cube plus x square plus x नहीं आएगा सर? एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट वन ले रहा हूँ। अंडर मॉड 2 देखो, ये इसका रूट तो नहीं एग्जिस्ट करता, ये करता है। 0 रॉन्ड पुट करके चेक करो। तो Q of alpha, if alpha is a root, then it must satisfy this one. So alpha 3 plus alpha plus 1 equal to 0. So alpha plus 1. I did the same calculation I had did in last GF2. So alpha 3 is alpha plus 1. Alpha 4 is alpha square plus alpha. Alpha 5 is alpha 3 plus alpha Square. So alpha square, the values of alpha cube is shabash, alpha plus 1 plus alpha square. Alpha 6 alpha square plus alpha 3. So alpha square alpha
1 plus alpha, and you can see alpha square plus 2 times alpha plus 1. So this will be 0. Ultimately what you will get? Alpha square plus 1. So if you can allow me, then alpha 7 is alpha cube plus alpha, and alpha 3 is alpha plus 1 plus alpha, and 2 alpha plus 1, and this is 0 again because 2 alpha into 0 times alpha is same in under mod 2. You follow my Yes, sir. calculation? So on alpha 7 what you will get? 1. So if you can calculate alpha 8, what you will get? Alpha. Alpha square. So there is a repetition after certain power. As I told you while discussing primitive root of modulo classes, that was the primitive element. So alpha is the primitive root of this equation. It means it generates all element of Galois field. So it has, so after certain power, it is what you call start repetition. So if I can elaborate this, alpha power t power n minus 1 is always equivalent to 1. This is general identity. Base may be anything. Okay. So how many elements are there in GF2 raised to power 8? How many? 256. No. In alpha square is, let us say, GF2 raised to power 3. So it has element like alpha infinity is 0, alpha power 1 is alpha square is alpha square, alpha 3 is 1 plus alpha. alpha plus 1, and similarly alpha 4, alpha 5, alpha. How many elements are there? 6. No, Total 8 बनते हैं. there are total 8 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Alpha 7, 8. 8. ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? तो अगर मैं इसको उसमें दिखना चाहता हूं, इसका भी आप टेबल ड्रा कर सकते हैं. इसमें जो if you have 3 element multiplicative 7 elements in that GF2 raised to power 3, how many elements are there other than 0? 7. So all 7 elements have inverses. But if you can see the if you can see these things like in Z8, how many elements are there in Z8? 8. If you can take the unit element, how many elements are there in Z8? Unit element 4. But its element, the cardinality of the element is 8. But it has only 4 elements, both inverses is possible. But in Galois field, other than 0, each and every element inverse is possible. So that is why we are going to incorporate Galois field. So let me elaborate this one. तो अगर आप ये देखें GF2 raised to power 2, let me elaborate 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. So
It's a binary representation. And another one is 0 0. We call it as a 0. This is, I call it this as a constant, coefficient of constant, and this is coefficient of what you call the alpha. That is, okay, so example में तो कोई question this is, you know what, a naught and this is a1. So a naught plus your 0 into alpha. अच्छा, question 2 मैं question next week करना है handle अच्छा, मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर gf 2 raised power 2 को z2 of x of q of x का ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, 2 है, तो ये अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 अल्फा, ये जो हमने लिखा था 2 माइनस 1 और 2 माइनस 1, और ए आई कहाँ से थे सारे, z2 में से होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए नॉट प्लस ए वन अल्फा स्लैश ए नॉट और ए वन बिलोंग्स टू z2, ठीक है जी। ये z22 की रिप्रेजेंटेशन है। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों कोफिशिएंट 0